The games today, some general discussion about the situation, a bit of general discussion about the semi-finals coming up in a couple of days' time. Now to put some flesh on some bones and talk about the nitty-gritty of the performances today. Starting with Pakistan's batting, another very, very impressive performance. No sort of opening partnership to speak of in the same way as normal, but Babar Azam, 66, again, another 50, yet another 50 for Pakistan's captain. Disappointment for Fakhar Zaman, who was the one worry in that top three, but for Mohammad Hafiz, for Shoaib Malik, lovely day out, some runs made at a very brisk tempo, and in fact, pretty much a very good performance all round. 189 for 4 on that Sharjah pitch, Sana, is always a pretty good result, I'd say. Yes, great result, and again, we started off with a slow start, as Akib mentioned, 35 in the power play, then 59 for 2 after 10 overs. So 130 runs were made in the last 10 overs, and that will be a little bit of a worry going into the knockout stages. But otherwise, great knock from Shoaib Malik and Hafiz also. Shall we have a look at some of the performances? First of all, Shoaib Malik, who belies his age. He's a very, very fit man. I'm told he trains incredibly hard, gets himself in the best shape possible, and his technique is excellent. If you look very closely at some of these shots, the way the head stays down as he's making these big shots is a great example to anyone trying to clear the boundary. There's a really good technique here. बिल्कुल अजहर भाई, आप और राशिद भाई डिस्कस कर रहे थे शोएब मलिक के बारे में, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। राशिद भाई पहले करेंगे मैं। जी राशिद भाई बोले प्लीज। राशिद भाई क्या है, आपके पास लाती हूँ, आप इनके पास भेजते हैं, इनके पास लाती हूँ। मैं ये सोच रहा था, खामोश इस वजह से था कि ये वो प्लेयर हैं जिनको सेलेक्ट नहीं किया था वर्ल्ड कप के लिए हमने, और देखें फास्टेस्ट अपनी ज़िंदगी की उन्होंने 50 जो बनाई है 18 बॉल पे, अमेजिंग बैटिंग की है उन्होंने। बॉलिंग जो ये हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की मैचअप की बात करते हैं, स्कॉटलैंड के अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते शायद, लग रहा है, तो उनको नहीं आइडिया हुआ। इन्होंने बड़ी अच्छी बॉल की थी और लेग स्पिनर शोएब मलिक के सामने छोड़ दिया, वो आखिरी ओवर, तो ये क्राइम है, ये तो उनके पे भी किया उन्होंने। और अजहर का कहना है कि हर कोई नहीं मार सकता। मेरा कहना बिल्कुल ठीक है, मतलब उसने पहले 3 ओवर किए हुए थे, ठीक है, मिस कैलकुलेट कप्तान ने किया, ठीक है, और मलिक के सामने उन्होंने स्पिनर छोड़े, तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। इसलिए बहुत जरूरी था इन दोनों से बात करना। वो डिस्कस कर रहे जो अंदर उसने पहले भी बॉल की है, इनटू द पिच जो बॉल था ना, वो बड़ा मुश्किल था उसको हिट करना, तो पहले वाले नहीं मार रहे थे ना। पहले देख ले आप, अगर उसका देख लें, अभी इसमें 3 छक्के 1 चौका लगा है, तो कितने रन बने आखिरी ओवर में, उसको टोटल 43 हुआ। लेकिन मलिक का 50 हो गया। मलिक का 50 हुआ, नहीं खेला अच्छा है, लेकिन ये बहुत पीछे बॉल किया है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से देखें, लास्ट ओवर और लेग स्पिनर अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब कि एक जुल्म लग रहा था मुझे ना खेल देखते हुए भी, लेकिन ठीक है, और रिकॉर्ड में आ गया कि मलिक ने 50 किया 18 बॉल पे, लेकिन बॉलिंग का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है जैसा वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल में होना चाहिए था। बस यही मेरे कमेंट हैं, इसी पे बंद करता हूँ अपने कमेंट्स। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आकिब भाई ने कहा कि हमें थोड़ा सा अपना जो है ना ऊपर से हमें थोड़ा सा, अगर हमने सेमीफाइनल में और फाइनल में जीतना है, तो हमें अपने थोड़े से जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्राइक रेट है, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी भी अगर आप देखेंगे 15वें ओवर में 112 रन से आखिरी हमने 77 किया, तो क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे करना, क्योंकि मसला ये हो रहा है कि अभी तो सारे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे क्लिक नहीं कर रहे। अभी फखर जमान वाला इशू अभी भी आएगा थोड़ा। इट्स फाइन, मतलब एक आधा प्लेयर आपका है, और मैं पहले भी कहा, आकिब भाई ने भी कहा, वो बिग मैच प्लेयर है, वो किसी वक्त बिग मैच हुआ ही नहीं अभी तक। नहीं कहूँ कौन सा वर्ल्ड कप का सारा मैच बिग होते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज हम अजहर भाई और उमर भाई कह रहे हैं कि आप ये 50 मान भी आकिब भाई, फखर हमारे साथ खेल रहा है डिपार्टमेंट से ना, और वो जब भी डिपार्टमेंट से खेल रहा है, जिस दिन उसने कहा कि आज मैं मेरिट पे खेलूंगा ना, उसने कभी रन नहीं किए, तो मेरा नाम मेरिट पे खेलने की कोशिश कर रहा है। मैंने मेरी लर्निंग with Fakhar 5 years, you know, he is the one you don't have to say anything to him.
One season we said, Fakhar, why can't you please this time just go deep, just go deep. Yeah, I'll go deep, I'll go deep. First ball, 6. Second ball, off the wicket, bang, 4 or whatever, and get out. Or we made few beginnings as well. But there are few players you don't give them any plan. Their own plan works better for them, like Chris Gale. Nobody can tell him that how to play. He will have his own zone, own way of performing and whatever the situation is. I think इसमें मैं फ़खर का आपको ये कहूँगा, देखें आप फ़खर की इनिंग्स जितने भी जब भी उसने रन्स किए ना, आप उसको उठा के देख लें। फ़खर जिस वक्त यहाँ खेलता है उसके साथ एक्स्ट्रा कवर वाले शॉट खेलता है ना, आज भी जिस बॉल पे वो आउट हुआ है वो रोंगन था, ठीक है। उसने जब ये सोचता है इस तरफ जाने का, वहाँ वो मिस हिट होती है उसकी। उसका जिस वक्त वो एक्स्ट्रा कवर खेलता है, जितने भी रन्स किए हैं उसने उठा के देख लें, उसमें आपको एक्स्ट्रा कवर के भी शॉट मिलेंगे और काउ कॉर्नर के भी शॉट मिलेंगे। आज भी जो बॉल था उसको वो वहाँ ले गया आराम से, वो उसको एक्स्ट्रा कवर लगती थी, वो उसका शॉट है। तो उसको खुद रियलाइज़ करना होगा, वो जैसे आकिब भाई ने की कि उसको खुद रियलाइज़ करना होगा कि वो इधर जिस वक्त खेलेगा तो फिर वो सारे तरफ खेल देता है। क्योंकि अब तो उन्हीं को खिलाना है ऑब्वियसली, क्योंकि और तो किसी को हमने ट्राई भी नहीं किया इस पूरे वर्ल्ड कप में, और उनसे परफॉर्मेंस चाहिए होगी न्यूजीलैंड में, तो इसलिए होपफुली वो ज़रूर परफॉर्मेंस मिलेगी। एक और हमारे सीनियर प्लेयर जिनकी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी, मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी आज 31 रन बनाए 19 डिलीवरीज पे। उनको भी देखते हैं। ये बैटिंग देखें, ये क्लास में टच ऑफ क्लास नजर आएगी आपको। ये नहीं है कि मलिक की नहीं थी, मलिक की बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की थी, फील्डर दिखाएंगे, लॉन्ग ऑफ था और पॉइंट था, ये इस पे इसमें एक्स्ट्रा कवर मारी है, ये प्लेसमेंट है, ये देखें प्लेसमेंट है, ये भी ये यहाँ से हमारी ये टच ऑफ क्लास नज़र आ रही है यहाँ पे। ये गेम आगे चेंज फिर हफीज़ ने किया पिछले मैच की तरह। बिल्कुल, देखिए उनका जो रोल था, अगर अभी मैं अगर इस पे बात करूँ, राशिद भाई जो छोड़ के चले गलत गए, ये हाथ मिला के आना चाहिए था। क्वालिटी अभी आप एंड तक फिनिश नहीं कर पाई, ये करना चाहिए बहुत। As well, even though I do not quite pick up some of the Urdu, I do understand some of the things that you were saying. Man, turn up to the party, and this is why I think they're in the Pakistan team. To enjoy himself against Pakistan today was Richie Berrington, not out, 54 at the end, and he's had a reasonably good tournament, some good scores prior to this game, but in the end you can simply say that Scotland were outclassed, as you'd probably expect, and the bowling for Pakistan was very much up to the task, and that was that. Yeah, and Barrington had one good innings before that, I guess 70 odd against Papua New Guinea, and he has started and finished his tournament well for himself. And the Scottish team, they have done well for themselves. They played some good cricket, but they can be more consistent, I guess. With batters like these, they have the talent in the tank. Well, I think they've been very honest with themselves, because when they qualified for the Super 12s, they were delighted with that. That in itself was a major achievement for the Scottish side. And they've made comments since, you know, they're here to learn, they're here to enjoy the experience. They're well aware, I mean, they're very honest, they're very well aware that playing against a side like Pakistan, you are very likely to come second, because Pakistan are top of this tree. And so whatever you get out of it, in many ways, is a bonus. I know one or two of those guys, I mean, for instance, a spare of thought for Dylan Budge, playing his first game in the Super 12s today, brought into the side by Scotland, and he's gone for naught. I mean, that's, you know, it's dreams shattered in the space of 2 balls, I think it was. Yes, and he was up against Shadab, who's in great form as well. So yeah, that's cricket. That's top class cricket. I'm afraid so. Okay, time for another break. We'll be back with more on Game On. To the bowling figures, Shine Shah Friede 1 for 24 from his 4. Imad opening the bowling again, none for 17. Harris Ralph again quick and clever, 1 for 27. Hassan Ali, as has been the case throughout the tournament, actually the most expensive, but he has his moments and he is ever enthusiastic, 1 for 33. And Shoaib Khan, 2 for 14 from his 4. So overall did the job very well against that Scottish side that didn't have the firepower to really challenge, and they kept them down to 117 for 6. Now, we've talked a lot about Pakistan's bowling for all the obvious reasons over the last couple of weeks, and it's been a very good unit and it's done the job. It's helped them win games.
You need both sides, of course, batting, bowling and fielding. That's 3 sides to go well. We're going to focus today on the spinners. Yeah. Just pick out the spinners. So what do the guys make of Shoaib and Imad? Yes, I think शादाब बहुत अच्छी टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहे हैं. आज भी 2 विकेट्स ली सिर्फ 14 रन देके. ओवरऑल पेस भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और वेरिएशन भी. राशिद भाई नहीं, बॉलिंग अच्छी की है जो वर्ल्ड कप में. इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इनकी परफॉर्मेंस पे आ गया था, विकेट नहीं ले रहे थे ये. अब इस वर्ल्ड कप में तमाम बॉलर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन T20 में स्पेशल बॉलर थे ये. जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और शुरू के 2 साल बहुत से गुजरे, लेकिन पैच हर बॉलर का आता है तो इनके ऊपर भी आया था. लेकिन अब ये इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कैप्टन को भी बड़ी हेल्प मिलती है कि आपका एक मेन बॉलर अगर विकेट्स भी ले रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, रन भी कम दे रहा है. तो इमाद वसीम और शादाब मेरे ख्याल से राइटली चॉइस है प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस. और एक जो चीज़ इनकी वापस अच्छी आई है राशिद भाई, जब ये बीच में इंजर्ड हुए थे गूगली इनकी कम हो गई थी. आपसे भी बात हुई थी, हसन से मैं एक शो पे बात करी थी, हसन चीमा से भी, कि जब से इनकी वो इंजरी आई थी गूगली इनकी कम हो गई थी, जिसकी वजह से बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही. वो बहुत ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान के लिए कि अब गूगली वापस भी आ गई है. कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन इनको सपोर्ट कर रही है. शारजा की पिच इनको सपोर्ट करेगी. मे भी लाहौर कराची शायद सपोर्ट ना करे, अगर सिडनी में खेलें सपोर्ट ना करे. तो ये कंडीशन वाले बॉलर हैं. कुछ पाकिस्तान के बॉलर जो खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में कुछ कंडीशन के बॉलर हैं. इससे पहले वाली सीरीज देखेंगे तो कुछ बॉलर ने परफॉर्म नहीं किया जिस पे क्रिटिसाइज किया गया था. तो लेकिन अभी बिग इवेंट है, वर्ल्ड कप है, यहाँ पे अच्छी बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है. गूगली में बड़ी जान आई है, लेकिन अभी भी अगर देखें गूगली ब्रेक हुई है, लेग ब्रेक नहीं हुई है. और इफेक्टिव उस वक्त ज़्यादा गूगली होती है जब आपकी लेग ब्रेक हो रही हो. टेस्ट मैच में जब भी नाकाम हो गए कि इनकी जो लेग ब्रेक थी वो ब्रेक नहीं होती. गूगली वो अब मैनेज कर लेते हैं. इस वजह से टेस्ट मैच में खिलाया गया. एज ए बैट्समैन ज़्यादा खेले, एज ए बॉलर कम खेले. बिल्कुल, ये तो हो गई टेस्ट मैच की बात, बट ओवरऑल वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. और साथ हम अब एक और बॉलर की तरफ नज़र डालेंगे जो बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे हैं. जो भी पाकिस्तान की बॉलिंग का प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, इसमें इमाद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2 के विकेट्स नहीं ली पर डॉट बॉल्स बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. 4 ओवर में आज भी सिर्फ 17 रन दिए और बहुत से जो विकेट्स मिल जाती हैं दूसरे बॉलर्स को भी, उसमें इनका भी रोल बड़ा अहम. आई थिंक इमाद को अब देखें कि जब भी पाकिस्तान टीम नंबर 1 साइड थी तो इमाद का बहुत अहम रोल था इसमें. और हमेशा जो नए बॉल के साथ ना वो टोन सेट करते हैं. ठीक है, शहीन के साथ जो उनको विकेट मिलती है, अगर ऊपर जैसे हमने पहले उस दिन मैच में देखा लेफ्ट हैंडर का जजाई की विकेट उन्होंने क्रूशल टाइम पे विकेट ली थी. और थ्रू आउट जो है ना, अगर आज भी आप उनकी बॉलिंग देखें तो मेरे ख्याल गालिबन 13 रन दिए हुए उन्होंने आज भी, 17 रन. तो मतलब वो सेट अभी जो है ना क्वालिटी इसकी ये हो गई है कि पहले सिर्फ ये एक डायमेंशन का बॉलर था, सिर्फ बॉल अंदर आता था. लेकिन अब हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा है और उससे पहले भी देखा है कि जिस वक्त सर्कल ख़त्म हो जाता है, पावर प्ले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है ना वो बॉल को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं उनका इंटरव्यू भी देख रहा था जो कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो फिंगर कैरम बॉल भी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि ये जो है ना दोनों हमारे स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. आई थिंक कि जो क्रेडिट जाता है शादाब को, जो पहले मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग किया उसमें एक बुरा बॉल किया था उन्होंने पूरे मैच में. और जब आप इंडिया जैसी टीम के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन आपके बैटिंग के खिलाफ अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस, क्रिकेट गेम है सारा कॉन्फिडेंस का, तो उनको उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मिला. एक चीज़ जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि हमारे एक्स्ट्रास जिस पे क्योंकि आज अगर आप देखें कि 7 हमने वाइट बॉल किए हैं एंड 3 नो बॉल्स. ओके, वी आर वेरी लकी. शाहीन ने उसमें वी आर वेरी लकी कि हमें 3 नो बॉल्स का मतलब है कि 18 एक्स्ट्रा रन, सो यू कैन गो एनीवेयर. हम लकी थे कि हमारे मैचेस इन टीम के खिलाफ थे और हमने वो डॉट बॉल हो गए. लेकिन इसमें हम अच्छी टीम के, क्वालिटी टीम के खिलाफ जो है ना ये वाला नहीं कर सकते. और आपको पता है T20 फॉर्मेट में 2 से 4 रन से आपकी गेम फ़र्क हो जा सकती है. तो ये कंसर्न है कि हमारा जो एक्स्ट्रा वाला है इस पे मेरा कंसर्न है. बहुत अच्छे एनालिसिस हैं और ये जीतने के टाइम पे ही एनालिसिस करने पड़ेंगे ताकि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में और मज़ीद आगे जा सकें. उमर, अब नॉकआउट स्टेजेस आ चुकी हैं और दोनों स्पिनर्स का रोल, जिन दोनों स्पिनर्स पे हमने बात की है, कितना अहम होगा. अभी तक सपोर्टिंग रोल इनका ज़्यादा रह रहा है, पर जिस तरह की पिचेस भी अब नज़र आ रही हैं लगता है कि इनका रोल शायद अगले 2 मैचेस में और भी इम्पोर्टेंट हो जाए. नहीं, बिल्कुल. अगर आप देखें दोनों को अपने रोल का पता है.
इमाद वसीम जिस तरह के बॉल कर रहा है उसका फेस बॉल में मोस्टली वो बॉल करता है नया बॉल पे, जो कि बड़ा मुश्किल टाइम है उस टाइम पे बॉल करना, और स्पेशली स्पिनर के लिए। तो वो अपना रोल बखूबी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जब आप डॉट बॉल करते हो तो उससे भी अपोजिशन पे दूसरी टीम पे ना प्रेशर बिल्डअप होता है। तो मेरे ख्याल से जो उसके जो हमें बॉलिंग अच्छी हो रही वो इसलिए कि एक इनसे जो ना वो एक पार्टनरशिप में आप बॉल करते हो, वो प्रेशर बिल्ड करता है, डॉट बॉल ज़्यादा कर देखिए आज भी अगर उसने 4 ओवर में 17 रन दिए तो इट्स मीन्स कि उसने पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, उस पर प्रेशर डाला है। और जो शदाब को जो हम वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हम जो कंसर्न था हमारा कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर में शदाब तो बॉल कर रहे लेकिन वो विकेट नहीं मिल रहे उसको, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है यूएई की, यहाँ पे आपके स्पिनर का रोल बहुत अहम है स्पेशली मिडल में। तो आई थिंक दोनों बखूबी अपना रोल निभा रहे, इमाद वसीम ऊपर से और शदाब जो एक चीज़ हम मिस कर रहे थे कि विकेट टेकिंग बॉलिंग वो उससे नहीं हो रही थी, जो कि अब उसने करनी शुरू की। मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए, और आगे जो हमारा जो क्रूशल मैच है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम पे उनको फॉर्म में आना ज़रूरी है। बिल्कुल। बोथ दीज स्पिनर्स आर बॉलिंग इन पार्टनरशिप एंड स्टिकिंग टू देयर रोल्स। Imad's role is just to keep building pressure and bowl those dot balls. He's doing that really well. And Shadab is getting us wickets in the middle overs, and that has been his role. We have only one concern in our bowling lineup, that is Hassan Ali. Indication is the other day he bowled a no ball. Today he bowled a no ball and a wide ball. Because when you're playing in a pressure game, one ball, no ball, and followed by a 6 can change the gear of the game. And when you're bowling in no balls, it means you're nervous. You're not confident. You're not at your best of confidence. So he has to be very careful before the big game. Clear your mind. There shouldn't be any doubt, because when there is a doubt, might ball a no ball. So your all thoughts and concentration goes on the field rather than where I'm going to bowl and how I'm going to manage the batsman. But the problem is Shaheen bowling no balls as well, because Shaheen bowled 2 today and Hassan bowled 1 today. But Hassan, like when you said I got concern on Hassan, I think there's concern definitely, because if you see Hassan bowled 2 maiden over. Like today he bowled 1 maiden over, but he's bowling a bad deliveries a lot. He's not consistent. He's if you see the dot balls, I think he bowled 12 or 13 dot balls today, and he went for 33. So he's giving the boundary balls. Normally he is very consistent with his line and length. I think someone needs to talk to him. Yeah, because once you bowl like China, I haven't seen him bowling no balls. Today he bowled. But if you're repeatedly bowling a no ball, then it signs that you have a problem, and that's a nervousness. That has to be, मेरे ख्याल से शाहीन को विकेट्स नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से शायद जोर ज़्यादा लगा। He's running too hard. I think सेम चीज़ जो आप प्रेशर की बात करें, बिल्कुल हसन पे प्रेशर होगा, क्योंकि हमेशा जो ना किसी भी प्लेयर पे एक जैसा टाइम नहीं होता। वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने 2017 के जो चैम्पियन ट्रॉफी में जिस तरह मैंने बॉलिंग की, मैंने अपनी सीरीज़ बना, बेस्ट बॉलर उसमें बना, तो सम टाइम आपको रियलाइज़ करना होगा कि ठीक है अब वो अंडर प्रेशर, क्योंकि उसको उस तरह की विकेटें नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है। की जरूरत है किसी को, उसको रियलाइज करना चाहिए कि कंपटीशन इज विद इन योरसेल्फ, तेरे साथ है, ना कि शाहीन और हारिस के साथ। I'll give him a call today. उसको बोलो कि हेलो, अपना रोल जो है ना सिर्फ वो कर। ये टाइम आता है कई दफा विकेटें नहीं मिलती तो नहीं मिलती, और मिलती हैं तो हैट्रिक भी मिल जाती है। आस्क रबाडा। You don't go after them. It will follow you if you stay disciplined. Quick question for Viv. These two spinners, one of whom is almost a swing bowler at the start of the innings, up against Australia in the semi-final. Aussies see leg spin, and they've got their own. They've got Zampa, of course, so they know about leg spin as well. How do you think they'll get on against Aussie? That doesn't necessarily say they played that well, because we've seen them suffer under that way. You have good leg spinners who would have done them as well, even though they would have had Zampa, who I guess would have been have some effect in the nets of such.
But when you look maybe at the individual like Wazim, I think he's just special because you have 2-in-1 in my opinion. You know, he can give you a little pace stuff, and he's so clever because he watches the batsman's movements and he gets the ball in areas where you cannot get onto him. And I think that's very good for him. For Iman, I think him getting 2 wickets, coming back into some sort of form, is quite crucial for Pakistan causes as well, because there were thoughts about him not really hitting his mark and hitting his spot. But the same way he's at now, you know, I guess he should go into the semi-finals with some confidence, and hopefully that Hassan Ali can find some sort of Advice. advice as well. You said you will give him a call later on this morning. Just But, he has to be calm. Calm and composed. Oh, well, okay, it's interesting because Hassan Ali is a character, isn't Yeah, he? yeah. When you see him on screen, you know, the hair and the expressions and the energy, you kind of don't want him to lose that. But at the same time, you want him to keep control of what he's doing. So I mean, you want that passion, you want the energy. The passion should but you be need there, the control. but yeah. Who's better? there must be to give him- something differently he's doing. He's Try and relate that to you. Maybe having you maybe here. going for pace, more pace, or maybe going for wickets. This was his Akib bhai, issue if with you the see- domestic also. Is In it? yeah, in Quaid-e-Azam Trophy last year, there were a lot of No balls. no balls. But in the PSL, he didn't bowl a lot of no balls. He's running from the wider. I just saw his videos, you know, like the video. I worked with him and watched his video today as well, watching closely. He's running from the wide, and he's ये decode किया ना? yeah, decode. This is the decode. You know, he's running like this from the wide and then going there. He's not. His momentum is not towards the target. Sometimes He changed. you believe Yeah, sometimes. He changed. Yeah, Yes, he's running wider and jumping in rather than, you know, before he was running straight in a Why straight did he line. change? Okay. I don't know. Sometime, you know, it's Okay, happened. yeah. You know, sometime Okay. it happens. ये सही करवाते हैं इसको, Let's save और something for, you know, when we preview that semi-final for 5 hours before the game. Don't Right. give them ideas. Okay, 5 minutes. Right, let's turn our attention now to the other game played today between New Zealand and Afghanistan. Afghanistan winning the toss, and they decided to bat first. This was what happened. Sadly, it wasn't quite as productive as they'd hoped for in Abu Dhabi. The openers came and went very quickly. There's some very good, well thought through bowling in the opening overs in that power play. So top 3 gone quickly. Gulbuddin 15. The only man to play an innings of any substance was Najibullah Zadran with that 73 from 48. So 124 for 8, very much below par, I'd suggest, in Abu Dhabi. Yes, and especially when they were batting first, I don't think so that they were expecting that the openers and the top order will go out that cheaply. I think credit to New Zealand and their think tank. They executed it really well, and that's what we thought, that New Zealand is a better side, and that's what they showed on the ground. Indeed. So that one innings of substance was played by Najib, 73. Let's have a look at the way he played that lone hand, the shots he played, the resistance he showed, the power, the placement, whatever it might be. This is, That's again, a great shot. that's a lovely shot, you're right. I mean, this is the challenge, isn't it, for the nations that want to compete at the top. They have to get more people like this playing together. I mean, these are great shots. There's some very fine shots. But if you look at any team that's going to prosper in a World T20, you need a guy doing this sort of thing. I mean, 70 is a good score around which to base an innings. But you need support. You need 2 or 3 others getting their 20s and 30s in good time. Then you build big totals. But for him today, a proud day. So we take our hat off to him as he acknowledges the support there. I mean, that's almost a sort of Rishabh Pant type shot, isn't it? Almost. Up it goes. Still more to come. If you compare him to Zazai, you know, he's technical more solid than Zazai. That's why, you know, like when somebody is bowling quicker and, you know, you can survive that and then you can play shots after that. Yeah, when the Zazai-Shahzad opening partnership, you want it to work, because if it does work, it's mighty entertaining. And the ball will disappear a long, long way. But you see Zazai so often, you know, he wants to go one way primarily, which is sort of over there somewhere. And when it connects, it does go 100 metres.
but it's always vulnerable. Yeah, international bowlers, you know, they got plans and, you know, everything, you know, put the ball outside our stump, you know, and then he can't hit there. He can only hit in his arc, you know, in that slot. If it's there, he can hit it. If he wants to improve, you know, his game, then he has to have shots through cover as well. So might need to work on that. So because otherwise, you know, international cricket, you know, playing against quality side, playing against Mitchell Stark and all these guys, Hazelwood, they're not going to give you ball over here. Okay, with the minnow side, yes, you can get balls here and there, and he can demolish them. सर भाई अगर आप नजीब की बात कर लेना, I don't think so कि वो technically इतना अच्छा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है कि वो जो उसकी शॉट सिलेक्शन वो सही है, वो वेट कर रहा है बैट बॉल के लिए कि वो जो बैट बॉल उसके मिलता है वो उसको पनिश करता है. अगर आप फिर शहजाद और उसकी बात कर रहे हैं तो वो उनको शॉट सिलेक्शन का कोई आइडिया नहीं है, वो बस जिधर उसके रडार में आ जाए वो घुमाते हैं. क्वालिटी मेरे ख्याल से नजीब की कि शॉट सिलेक्शन इसकी अच्छी है, लेकिन वो शॉट सिलेक्शन इस वजह से अच्छी है ना कि वो उधर भी खेल लेता है, तो तभी है ना, अगर आपको एक ही तरफ होगी तो फिर मुश्किल हो जाता ना. तो शॉट सिलेक्शन उसी वक्त होगी जब आप इधर भी खेल लेते हो इधर भी खेल लेते हो. ये लोग सिर्फ बॉल ही ये देख रहे होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है. I think you're right. You have to develop the other side of your game. Otherwise, bowlers will target one area knowing they can keep you quiet. If you come up with shots that reflect the fact that you've thought about it, then it cuts down the options for the bowlers, gives you options to score runs. Anyway, we will leave that there for a moment or two. I think so. Are we going for a break? I thought you were going for a break. I was. I thought, do you want to leave now? I said, what about that last over from Nisham to Rashid Khan? I think there was a lot of runs missed there. And we have heard that Rashid Khan can smack it to all parts when he gets going. That to me was an opportunity missed, especially with the field setting also. 4-5 dot ball. Yep. Yeah. That's all I wanted to get in. Okay. Yeah. That's a very good point. इसी के साथ हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, उसके बाद हम वापस आएंगे और इस मैच को और डिटेल में देखेंगे. गेम ऑन है.